Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Givemock. I hope you all are doing good. So guys, today in this video we will go through the basic of derivatives. As you already know, there is a topic on derivatives in the syllabus of SEBI Grade A, RBI Grade B and NABARD as well. Okay. So topic जो है finance section में, as you can see general topics के अंदर basic of derivatives है, forward, futures and swap. सो ये जो तीन चीजें हैं डेरिवेटिव्स के, इवन इंक्लूडिंग द ऑप्शंस आल्सो, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो वी विल गो थ्रू दैट इन दिस वीडियो एंड वी विल ट्राई टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट थ्रू दिस वीडियो. ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं. पहले देखते हैं कि व्हाट इज डेरिवेटिव इज ऑल अबाउट. ओके, डेरिवेटिव गाइस, यू कैन सी डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट डिराइव्स इट्स वैल्यू और प्राइस फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अनदर एसेट नोन एज एन अंडरलाइंग एसेट्स. जो गाइस डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो जिसका जो वैल्यू डिराइव होता है वो उसका अंडरलाइंग एसेट्स से होता है. अंडरलाइंग एसेट्स क्या क्या है, दैट वी कैन सी दैट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स वी हैव इज, फर्स्ट इज इक्विटी. बहुत कॉमन है इक्विटी, स्टॉक्स वगैरह. एंड सेकंड मोस्ट कॉमन इज दैट इज कमोडिटीज. इसमें भी काफी डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं. थर्ड इज करेंसीज. फोर्थ इज बॉन्ड्स. बॉन्ड्स में भी काफी ज्यादा डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होते हैं. एंड इंटरेस्ट रेट ऑल्सो. इंटरेस्ट रेट में यू मस्ट हैव हर्ड स्वैप, तो इसके थ्रू वो स्वैप जो है मोस्ट कॉमन डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है इन केस ऑफ इंटरेस्ट रेट. ओके, सो ये जो पांच है ये मोस्ट कॉमन अंडरलाइंग एसेट टाइप्स है. ओके, जिससे कि डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अपना वैल्यू डिराइव करते हैं. ओके, सो गाइज नेक्स्ट लेट्स सी द टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, द मोस्ट कॉमन टाइप. गाइज द मोस्ट कॉमन टाइप्स डेरिवेटिव्स आर फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शन एंड स्वैप. ये चार जो टाइप्स हैं डेरिवेटिव के, ये काफी कॉमन है. तो एक का डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं. Okay, let's go through the definition one by one. What is forward? Let's see. Forward में क्या होता है? A forward contract is a contract between two parties to buy, sell an asset on a specific date in the future at a predetermined price. It is mostly used for hedging purpose, basically insurance against the price risk. तो guys इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग. सपोज एक फार्मर है जो कि पोटैटो की फार्मिंग कर रहा है. ओके, he has produced or he is going to produce 100 kg of potato in his farm. All right, suppose in the month of September the price is rupees 40 rupees per kg, and farmer को ये लगता है कि due to market volatility, okay, price will go down in future. Okay, उसे लगता है कि 40 की जगह पोटैटो 30 रुपीज के जी हो जाएगा in future. इन द मंथ ऑफ लेट्स से इन द मंथ ऑफ नवंबर ये 30 रुपीज हो जाएगा. उसको लगता है जब इसे बेचने का टाइम आएगा दैट प्राइस विल नॉट बी द सेम, इट विल गो डाउन. फार्मर थिंक्स लाइक दैट. ओके, सो ही थिंक्स उसको कि नुकसान हो जाएगा काफी ज्यादा अगर वो 30 रुपए में उसे बेचना पड़े. सो इन ऑर्डर टू मिटिगेट द रिस्क ही एंटर्स इनटू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. ओके, एंड एट द सेम टाइम एक साहूकार है उसी के गांव में, मिस्टर रामलाल. उसे लगता है कि द प्राइजेस विल गो अप इन द फ्यूचर. Alright, he thinks that प्राइस तो काफी ज्यादा ऊपर चला जाएगा इन द मंथ ऑफ नवंबर. 40 से 50 हो जाएगा या 60 हो जाएगा, जो भी उसे लगता है कि, लेकिन इससे ऊपर चला जाएगा. so he speculates that price will go up in the future, so he also enters into contract with the farmer. so in farmer क्या करता है, जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, he enters into a contract to sell 100 kgs of potato to रामलाल at the rate of 40 rupees per kg. क्या है यहाँ पे देखिए, प्री डिटरमाइंड प्राइस है. ओके, 40 रुपए किलो आज का रेट चल रहा है. आज के दिन वो एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में पर केजी ऑन 1 नवंबर 2020. डिलीवरी जो होगा पोटैटो का वो होगा ऑन 1 नवंबर, बट 40 रुपए में ही होगा. उस टाइम पे रेट जो भी रहे इन द मंथ ऑफ नवंबर, रामलाल हैज टू पे 40 रुपीज टू द फार्मर. ओके, बाय दैट वे फार्मर विल हेज द पॉसिबल डिक्लाइन इन प्राइस. ओके, प्राइस रिस्क को फार्मर ने कम कर दिया इसके थ्रू. वो भी एकदम स्ट्रेस फ्री हो गया कि उसे 40 रुपीज तो चलो मिलने ही मिलने हैं. ऑलराइट, सो दैट इज हाउ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स. बेसिकली प्राइस रिस्क अगेंस्ट इंश्योरेंस है. सो गाइज लेट्स गो थ्रू द नेक्स्ट वन, दैट इज फ्यूचर्स. फ्यूचर्स, व्हाट इज फ्यूचर इज ऑल अबाउट, लेट्स सी. फ्यूचर्स में क्या होता है, फ्यूचर्स आर सिमिलर टू ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. ओनली डिफरेंस क्या है, फ्यूचर जो है स्टैंडर्डाइज्ड अग्रीमेंट होता है टू बाय और सेल एन एसेट इन द फ्यूचर. ओके, एंड फ्यूचर्स आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज
एंड फ्यूचर्स आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। ओके, फॉरवर्ड के केस में क्या होता था, वो लोग फॉरवर्ड जो है स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होता, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है, प्लीज रिमेंबर। ओके, फॉरवर्ड इज एन ओवर द काउंटर प्रोडक्ट वेयर एज फ्यूचर्स इज अ एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। ऑलराइट, सो हम लोग आगे देखेंगे कि फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स का जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या होता है। सो एज यू कैन सी हियर, फ्यूचर फॉरवर्ड्स आर ट्रेडेड थ्रू फोन और टेलेक्स, बट फ्यूचर्स आर traded on derivative exchange. Okay, you can go through the point number 2. All right, and forwards are self-regulated, but futures are highly regulated and they are regulated by derivative exchange. Point number 3. And as you can see, point number 4, forwards are customized product. They are tailor-made sizes. Okay, but futures are standardized sizes. It is decided by the exchange. And as you can see, point number 5 under the forward, delivery on any date as decided by parties. Forward के केस में क्या करते हैं, parties delivery date decide करती है, but in the case of futures, exchange decide करता है what will be the delivery date. Okay, a specific date exchange decide करता है. All right, and forwards are not listed on exchanges, that is why they are illiquid, they are not liquid, very liquid. Okay, and at the same time futures are very liquid since it is listed on the exchange. Okay, and it is tradable. All right, and there are so many participants, that is why there is a liquidity in the case of futures. Okay, so guys, ये जो basic differences है, you can note down the basic differences between the futures and forward. All right, next we will go through the options. What is an option contract? So guys, this option topic is very important. I think last year in the RBI Grade B mains examination, there were 2 or 3 questions from the option topic as well. All right, so काफी ध्यान से देखिएगा. So option contract क्या है? It is a contract which gives one party the right to buy or sell the underlying asset on a future date at a predetermined price. The other party has the obligation to sell or buy the underlying asset at this predetermined price. It is also called the strike price. Okay, guys, option जो है, it is similar to the future contract or the forward contract, but इसमें क्या है, इसमें जो ऑप्शन जो परचेस करता है, सपोज आई एम परचेजिंग द ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, सो आई हैव द राइट टू बाय बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय. ओके, मैं चाहूं तो बाय कर सकता हूं और चाहूं तो इसे छोड़ भी सकता हूं. ओके, वी विल सी इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो थ्रू द सम एग्जांपल व्हाट इज द ऑप्शन इज ऑल अबाउट. ओके, देन द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर टू यू. ऑलराइट, सो एज यू कैन सी, द ऑप्शन व्हिच गिव्स द राइट टू बाय इज कॉल्ड द कॉल ऑप्शन. जो ऑप्शन आपको राइट देता है बाय करने के लिए, वो कॉल ऑप्शन कहलाता है, while the option which gives the right to sell is called the put option. Okay, नीचे explanation में you can see call option क्या है. Call option enable the buyer of the option to exercise his right but not the obligation to buy a particular security at a predetermined price on the date of expiry of the contract. Whereas put option में क्या होता है, put option enables the buyer of the option to exercise his right but not the obligation to sell particular security at a predetermined price on the date of expiry of the contract. Okay, हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कॉल ऑप्शन क्या होता है और पुट ऑप्शन क्या होता है. Okay, under the option contract. So as here you can see, suppose आपके पास रिलायंस के 100 शेयर्स हैं और अभी जो प्राइस है वो 300 पर शेयर्स है. ऑल राइट, so guys, हम लोग कॉल ऑप्शन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ओके, सपोज यू हैव 100 शेयर्स ऑफ रिलायंस. ओके, 100 शेयर हैं आपके पास रिलायंस के और करंट मार्केट प्राइस 250 रुपीज चल रहा है, करंट प्राइस. ओके, एंड आपने कॉल ऑप्शन बाय किया. ओके, 300 रुपीज के हिसाब से प्री डिटरमाइंड प्राइस आपने रखा 300 रुपीज आफ्टर 3 मंथ्स. ओके, आफ्टर 3 मंथ्स आप 300 रुपीज के हिसाब से उसको परचेज करेंगे. यू हैव द राइट टू बाय बट नॉट द ऑब्लिगेशन. ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, प्रीमियम पे करना होता है कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन खरीदने के लिए. तो कॉल ऑप्शन आपने 25 रुपए पर शेयर के हिसाब से, प्रीमियम के हिसाब से खरीद लिया. सो आपका टोटल कॉस्ट कितना पड़ा खरीदने के लिए ऑप्शन को, इट इज 2500. ओके, सपोज आफ्टर 3 मंथ्स मार्केट प्राइस अगर 200 हो जाता है, then you have the right to buy but not the obligation. Okay, so you will not exercise the option. आपको तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है. ऑलराइट, सो इसमें आपने लूज कितना किया, सिर्फ प्रीमियम अमाउंट आपने लूज किया. ओके, कॉल ऑप्शन में कितना आपने लॉस अपना मिनिमाइज कर लिया. अगर इसमें अगर ऑब्लिगेशन होता आपको खरीदने के लिए, देन यू वुड हैव लॉस्ट 50 into 100 ऑलमोस्ट 5000 प्लस 2500 प्रीमियम एज वेल. ओके, तो इतना आपका लॉस हो जाता, लेकिन वो नहीं हुआ. एंड सपोज 400 रुपये अगर शेयर का प्राइस हो जाता है आफ्टर द expiry of the 3 months, then you have the right to buy, then you can buy that. Okay,
आपको 30,000 में 100 शेयर मिल जाएंगे उस दिन, वंस द एक्सपायरी पीरियड इज देयर। सो 30,000 मिलने के साथ आपका नेट गेन कितना हो जाएगा, क्योंकि मार्केट प्राइस अभी 400 चल रहा है, एज यू कैन सी हियर ऑन द एक्सपायरी डेट मार्केट प्राइस अगर 400 चल रहा है तो आपको सीधा सीधा 10,000 का गेन हुआ, और उसमें से आपने जो प्रीमियम पे किया था 2500 वो निकाल दो तो आपको 7,500 का टोटल गेन हो गया। सो दैट इज हाउ कॉल ऑप्शन वर्क। ओके, ऑप्शन वर्क्स, इसमें आपने अपना लॉस मिनिमाइज कर लिया। ओके, आपका लॉस एक प्रीमियम अमाउंट तक ही होता है, बट यू कैन गेन अनलिमिटेड अमाउंट under the option. So that is how the call option works. Let's go through the put option example. Put option में क्या होता है, you have the right to sell but not the obligation to sell. Same example को हम लोग समझते हैं। Suppose आपके पास 100 शेयर हैं रिलायंस के। Okay, so what you do is आप 300 के शेयर प्राइस के हिसाब से, स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से 3 महीने के लिए जो है पुट ऑप्शन खरीदते हैं। ओके, सपोज करंट प्राइस जो चल रहा है वो 250 चल रहा है। अगेन यू पे ए प्रीमियम टू बाय द पुट ऑप्शन। ऑलराइट, 2500 रुपए आपने दिया। सपोज आफ्टर अ मंथ मार्केट प्राइस इज 300, देन द ऑप्शन इज नॉट एक्सरसाइज्ड। ऑलराइट, नेट लॉस क्या हुआ, प्रीमियम अमाउंट हुआ 2500 रुपए। लेकिन सपोज आफ्टर अ मंथ मार्केट प्राइस 200 रुपया हो गया। ओके, तो यू हैव द राइट टू सेल बट नॉट द ऑब्लिगेशन एज आई टोल्ड यू इन केस ऑफ द पुट ऑप्शन। सो आपने अपना राइट एक्सरसाइज किया, आपने सेल कर दिया। 300 का शेयर जो था अभी 200 आ गया है, लेकिन आपके पास राइट टू सेल है 300 में ही बेचने का। सो व्हाट यू डिड, आपने 300 में ही शेयर को बेचा 30,000 में, जबकि करंट मार्केट प्राइस अभी 20,000 हो चुका है। तो आपको मोटा गेन कितने का हो गया, 7,500 आफ्टर डिडक्शन ऑफ प्रीमियम एक्सपेंसेस। ओके, सो पुट ऑप्शन में आपका राइट टू सेल है और कॉल ऑप्शन में आपका राइट टू बाय है। ओके, बट नॉट द ऑब्लिगेशन। दैट इज व्हाट ऑप्शन इज ऑल अबाउट। सो गाइज वी विल गो थ्रू द स्वैप। स्वैप क्या होता है, स्वैप में क्या है, स्वैप इज ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच टू पार्टीज एक्सचेंज देयर फ्यूचर कैश फ्लोज for a period of time. Okay, the most common type of swap is an interest rate swap. In this, parties agrees to exchange interest rate payments. Okay, so इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं आप। सपोज कंपनी ABC जो है उसने बोरो किया है 10 लाख रुपीज, और वो वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है अपने लोन पे, दैट इज करेंटली 8% के हिसाब से वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है। ओके, ABC कंपनी जो है जिसने बोरो किया 10 लाख रुपए 8% के हिसाब से, वो कंसर्न है इंटरेस्ट रेट कहीं बढ़ ना जाए। ओके, क्योंकि फ्लोटिंग रेट है, वेरिएबल रेट, तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट। ओके, सो ABC क्या करता है, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है कंपनी XYZ के साथ। कंपनी XYZ भी 10 लाख का लोन है उसके ऊपर भी सपोज, और वो अभी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है 9% के हिसाब से। ओके, तो इन दोनों ने क्या किया, अपना जो है इंटरेस्ट फ्लो था वो स्वैप कर लिया। दैट मीन्स ABC विल पे 9% टू XYZ कंपनी ऑन इट्स 10 lakhs प्रिंसिपल, एंड XYZ विल पे ABC 8% इंटरेस्ट ऑन द सेम प्रिंसिपल। ओके, एट द बिगिनिंग ऑफ द स्वैप ABC विल जस्ट पे XYZ द 1% डिफरेंस बिटवीन द टू स्वैप रेट। ओके, तो ये इंटरेस्ट रेट्स जो है अपना फ्लो जो है इंटरेस्ट फ्लो ये स्वैप करते हैं। इसमें करेंसी भी स्वैप होता है। ओके, अंडर द स्वैप यू मस्ट हैव हर्ड RBI और जापान के बीच, जापानी सेंट्रल बैंक जो है उनके बीच करेंसी स्वैप किया था एग्रीमेंट। इवन श्रीलंका के साथ भी RBI कर चुका है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। सो गाइस वी विल गो थ्रू द क्वेश्चन वन बाय वन। ओके, वी हैव 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू दिस ओनली। डेरिवेटिव से रिलेटेड ही 11 इंपॉर्टेंट MCQs हैं। सो लेट्स गो थ्रू द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। सो इन ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट द पार्टी हु कमिट्स टू सेल एन एसेट एट ए स्पेसिफाइड डेट इन द फ्यूचर टेक डैश पोजीशन, and the party who commits to buy an asset at a specified date in the future takes a dash position. So you can go through the options. Option A is open, closed. Option B is closed, open. Option C is short, long, and option D is long, short. So the correct answer is short, long. Okay, guys, हमेशा याद रखिएगा, the party who commits to sell an asset, he shorts his position. Okay, and the party who commits to buy an asset, he is going long on his position. Okay, so let's move on to the question number 2. Question number 2 is using future contracts to transfer price risk is called. You can go through the options here. Option A is arbitrage, option B is hedging, option C is speculating, option D is diversifying. So the correct answer is option B, that is hedging. So guys, let's move on to the question number 3. Question number 3 is which of the following is best described as selling a synthetic asset and simultaneously buying the actual asset? Okay, so you can go through the option. Option A is arbitrage, option B is hedging, option C is speculating, and option D is diversifying. So the correct answer is option A, that is arbitrage. Arbitrage is all about, it is the act of buying a security in one market and simultaneously selling it in another market.
at a higher price, thereby enabling investors to profit from temporary difference in cost per share. Okay, so moving on to the question number 4. Question number 4 is, which of the following has the right to sell an asset at a predetermined price? So you can go through the option. Option A is a call buyer, option B is a call writer, option C is a put writer, and option D is a put buyer. So guys, the correct answer is option D, a put buyer. Put buyer जो है he has the right to sell an asset at a predetermined price. हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, you must have gone through. Put buyer जो है he has the right to sell, and call buyer जो है he has the right to buy. Okay, moving to the question number 5. Which of the following has the right to buy an asset at a predetermined price? You can go through the option. A call buyer, option B is a call writer, option C is a put writer, and option D is a put buyer. So guys, the correct answer is option A, that is a call buyer. Moving on to the question number 6. The amount paid to buy an option is called. You can go through the option. Option A is strike price, option B is option advance, option C is premium, and option D is discount. So guys, the correct answer is option C. Premium पे करना पड़ता है, जैसा कि हमने previous example में options के example में बताया. You have to pay a premium to buy an option. Okay, कोई भी option आप buy करें, call option और buy option, call option और put option, आपको you have to pay the premium. Okay. Moving on to the question number 7. In an option contract, when an asset is selling at a strike price below its market price, it is said to be. So you can go through the option. Option A is long position, option B is at the money, option C is out of the money, and option D is in the money. So guys, the correct answer is option D, that is in the money. क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए. A call option having stock as underlying asset with a strike price of ₹150, for example, would be considered in the money if the underlying stock is valued at ₹160 per share. So कभी भी when the strike price is below its market price, okay, whatever the current market price is, then it is considered as ITM, in the money. Okay, suppose suppose the strike price is, the determined price is 150 per share, all right, and after the expiry of, on the expiry date of the option, if the current market price is more than the strike price, then it is considered as in the money. Okay, तीन चीजें होती हैं, in the money, out of the money, and at the money. In the next question, let's see what the question is. So question number 8 is, in an option contract, when an asset is selling at a strike price above its market price, it is said to be. So you can go through this option. Option A is long position, option B is at the money, option C is out of the money, and option D is in the money. So guys, the correct answer is C, out of the money. Same previous question में जो हमने बताया in the money क्या होता है, तो इसके opposite होता है out of the money. For example, a call option having a stock as underlying asset with a strike price of ₹150, for example, would be considered ITM if the underlying stock is valued at ₹140 per share. Okay, suppose the strike price 150 है और अगर current market price share का अगर 140 है, तो वो out of the money consider किया जाएगा. Guys, three types के होते हैं, out of the money, in the money, and at the money. Options के ये काफ़ी important ऑप्शंस के ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है. इन द मनी में, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट स्ट्राइक प्राइस इज बिलो इट्स मार्केट प्राइस, एंड आउट ऑफ द मनी में स्ट्राइक प्राइस अबव मार्केट प्राइस होता है, एंड at the money mein strike price is equal to the market price. Okay, so let's go through the next question. Question number 9. In this, it is asking the differential between the spot price and the future price is known as. So you can go through the options. Option A is the spread, option B is the basis, option C is the gap, and option D is the differential rate. So guys, the correct answer is option B, the basis. As you can see here, basis is the difference between the spot and the future price of the same underlying security, whereas the spread is the gap between the bid and the ask price of a security or asset like a stock, bond or commodity. Okay, spread क्या होता है, bid and ask price का gap होता है, और basis क्या होता है, spot and future prices का difference होता है. Okay, so moving to the question number 10. Question number 10 is, the exchange of interest rate payment flows or foreign currencies are called. Quite an easy question. Okay, you can go through the options here. Option A is swaps, option B is options, option C is futures, option D is forward. So guys, the correct answer is option A, that is swap. Swap में मैंने पहले भी बताया कि इंटरेस्ट रेट पेमेंट फ्लोज जो हैं या फॉरेन करेंसी जो है वो स्वैप किए जाते हैं, वो एक्सचेंज किए जाते हैं. ओके, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11. 11 is the type of option that can be exercised only at the date of expiration is classified as. So option A is Indian option, option B is vanilla option, option C is European option, and option D is American option. So guys, the correct answer is option C, that is European option. यूरोपियन ऑप्शन में क्या होता है,
जो आप ऑप्शन है वो एक्सरसाइज कब कर सकते हैं, ओनली द डेट ऑफ एक्सपिरेशन, ओके। बट इन केस ऑफ अमेरिकन ऑप्शन यू कैन एक्सरसाइज इट बिफोर द डेट ऑफ एक्सपिरेशन एज वेल, ओके। यही डिफरेंस है यूरोपियन ऑप्शन और अमेरिकन ऑप्शन में, ऑलराइट। सो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इफ देर इज एनी डाउट यू कैन कमेंट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई टू आंसर एंड वी विल ट्राई टू क्लैरिफाई। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड share with your friends. Thank you so much for watching.